Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's video I'm going to create this subtle, elegant, festive makeup look using all drugstore affordable products. I will show you step by step everything. So if you are interested then please keep on watching. सबसे पहले तो मेकअप करते टाइम हेयर चेहरे पे नहीं आना चाहिए, तो मैंने पीछे कर लिया है। स्किन केयर मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बट आई विल बी यूजिंग दिस पिलग्रिम गोल्ड फेशियल ऑयल। आई लव दिस फेशियल ऑयल, इट्स वेरी लाइट वेट, ग्रेट टू वेयर अंडर मेकअप। इससे मेरा फेस बहुत ही स्मूथ फील होता है। इट गिव्स अ सटल ग्लो टू माई स्किन एंड मेकअप भी केकी पैची नहीं होता है। Now I'll be using this Pore Minimizer Primer by Insight Cosmetics। इससे आपके जो पोर्स है वो ब्लर आउट हो जाते हैं और एक इवन सरफेस मिलता है मेकअप करने के लिए, और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग बनता है। Now I'll be using the Mars Cancel Concealer। ये मैंने न्यूली ही ट्राई किया है। You must have seen in my short video। I like to blend it with my fingers only। बहुत ही easily blend हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ये मेरे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है। I love the flawless finish it gives। Now I'll be using this Maybelline Lumi-Matte foundation which I recently purchased from Nykaa। फाउंडेशन को डॉट डॉट करके पूरे फेस में मैं पहले अप्लाई कर लेती हूँ। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट द नेक, एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड बाय द शेड मैच। आई मीन लुक एट दिस, इट्स लाइक माई स्किन कलर ओनली, एंड आई लव द फॉर्मूला। ये बहुत ही लाइट वेट है, इजीली ब्लेंड हो रहा था। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा मुझे ब्लेंडिंग में, एकदम स्किन लाइक फिनिश था इसका। Of course you can build up the coverage as well। Now I know what's the hype was about। Next I'll be using my all time favorite Maybelline Fit Me Compact Powder। इसको मैं अपने अंडर आई एरिया में और स्पेशली टी जोन एरिया में अप्लाई कर लूँगी using this kind of pizza puff for a flawless smooth finish। Now I'll be using this Swiss Beauty makeup fixer to set everything up। It's quite affordable and makes my makeup last longer। नेक्स्ट आई बी यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी आईब्राउ पैलेट। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई एब्सोल्युटली लव दिस पैलेट। आई एम यूजिंग द डार्केस्ट शेड टू फिल इन माई ब्राउज। बहुत ही नेचुरल फिनिश है इसका, आप देख सकते हो द डिफरेंस। काफ़ी डिफाइंड और पॉलिश लुक आता है आईब्रो कर लेने से। नाउ आई एम यूजिंग अ स्पूली ब्रश टू ब्रश आउट माई आईब्रोज। Now I'll be using this Nykaa 4-in-1 eyeshadow palette, and इसमें से I am using the lightest color and applying it on my eyelids as a transition color। Then I'm taking this dark brown sort of color and applying on the outer corner of my eyes। बहुत ही अच्छे से blend करना है। The colors are quite pigmented and smooth finish है, फॉल आउट भी काफ़ी कम है। एक बार में बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करना है। I am applying little bit more on the outer corner to make it look darker। Then I'm applying this golden shimmery color on my eyelids, and festival है तो golden shimmer तो अप्लाई करना ही है। इसको मैं inner corner से लेके middle part तक अप्लाई करूँगी। The pigment is amazing, love this। Now I'll be using this Mars sketch pen eyeliner to create wing eyeliner। ये waterproof and smudge proof भी है। Now I'm curling my lashes and I'll be using the Mars Double Trouble mascara। I've been using since long and I absolutely love this mascara। Makes my lashes look thicker, longer and voluminized। It is super affordable but the result is amazing। Now I just took some brown eyeshadow on the smaller eyebrow brush and applying on the lower lash line। Also applying a kajal very lightly over it। I don't mostly apply kajal on the waterline, but you can if you want to। Now I'll be using this recently purchased Mars blush palette which also has contour shade and highlighter in it, and इसके colors काफ़ी subtle है but इसका pigment आप build up कर सकते हैं। Then I took the contour shade and trying to contour my face a little bit। I don't always do this step, but yeah, whenever I feel like I do it। Now I'll be using this Maybelline Master Chrome highlighter in the shade Molten Gold। It gives a very subtle natural glow to your skin। I am applying on the high points of my cheeks, nose, eyebrows, cupid's bow। Love the smooth finish, it looks very pretty।
And last but not the least, applying this Blue Heaven Powder Matte Lipstick in the shade Mohagany Moment. It's a very pretty brownish maroon sort of color, perfect for this festive season, coming wedding season. It is quite comfortable on the lips and it's transfer proof as well. This is a perfect fall winter shades, will suit all Indian skin tones, so pretty. Now I'm applying very lightly this Mars lip liner in the shade Scandalous Brown. And this is how the lip color is looking, and trust me, the combo is under rupees 250. And yeah, this is the final festive makeup look. Very subtle, elegant, using all budget friendly products. I will mention all the products links in the description box so you can check it out. Let me know in the comment section how you guys like this video, or if you have any queries. I will see you in my next video. Tab tak ke liye happy Diwali in advance. Stay safe, stay happy, stay beautiful. Bye.